मीडिया को कि इसको कैसे लिखें। धनुष में षटकोण वाला शो होता है जो लास्ट वाला है, और आपका नाम, तो शमिताभ हम इसको हिंदी मीडिया में शहर वाले शो से लिखा जा रहा है वो, तो इसको षटकोण वाला शो से शुरुआत करें या शहर वाले से? सर जो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जब आप अपना रिव्यू लिख रहे होंगे मेरे पास आइएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है, और शमिताभ की स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए वो भी बताओ। पेट पठा श जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। श सर हिंदी में लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी, आपने जानकारी दे दी। पेट पठा श जी, उसके आगे ई की छोटी ई की मात्रा म, तो आ की मात्रा भ, शमिता। अमित जी, अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ट्रेलर के लिए। बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर हमें देखने मिला। अगर आज के युग में कोई रियल लाइफ में शमिताभ हो तो उसमें आपके हिसाब से किस तरह के गुण होने चाहिए? आज की तारीख में, आज के युग में, आज की यंग जनरेशन के अगर एक्टर शमिताभ अगर कोई आए तो उसमें आपके हिसाब से किस तरह के गुण होने चाहिए? ऐसे ही होने चाहिए जैसे धनुष और मेरे हैं। किस तरह के गुण वो बता भी दीजिए। सर ये जब आप फिल्म देखेंगे अब आपको पता चलेगा थैंक यू किस तरह के गुण है हमारे जी। आखिरी दो सवाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों। Mr. Bachchan, like you just said, I'm sorry, I'm going a little off tangent, that you were the brand ambassador for UN, the program that you mentioned. But also we know that you are the brand ambassador for Gujarat. So my question is about, the forthcoming event when Barack Obama is visiting India. Would you be attending the parade in Delhi? And my second question is, would you be doing the ad campaign for Mr. Modi for Gujarat? Because there's been information. No, I've already clarified that about the sure. ad campaign. I've said that no, there's been no such initiative from anyone. Okay. So that was a rumor. I'm grateful if you can clarify that. Sure. And Republic Day Parade, no, because I think we are going to be busy promoting the film in various parts of the country and involved in several events here, meeting members of your fraternity, sure. On a one-to-one, and trying to promote the film. Promotions have become very important, as you can see. You have to dress up and you have to have this huge event and try and promote the film. So I hope you'll be very generous with us when you do write about it. Will do, sir. धनुष, लास्ट क्वेश्चन। धनुष आपसे बात करना चाहूंगी। आप बड़े शांत बैठे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहूंगी मैं। दिव्या सिनेमा हैंगओवर मैगजीन से। आपने मैं ये फिल्म में काम किया। शमिताभ आपके नाम को अमिताभ जी के नाम के साथ जोड़ा गया। पहला क्वेश्चन कि आपको कैसा लग रहा है? I don't know if I've done enough work to deserve that kind of honor, but very gladly enjoying it, very happily enjoying it. I just got lucky. God has blessed me. God has always blessed me with more than what I deserve. So this is one such thing. अच्छा, दूसरा ये पूछ रही थी कि आपने ये काम करने के लिए क्या होमवर्क किया पहले बार आने के लिए? Only one homework I did. I blindly trusted Balki and PC sir. That's it. Very good. Akshara, I have a question for you here. You wanted to be a director. So Balki has said that in an interview, so you can't deny that. Sorry, can you repeat that? You wanted to be a director. That's what has been told by Balki in an interview given to us. So how did you convince yourself to get into acting? And do you plan to direct a movie in future? Well, yes, I was an AD before getting into acting, and I didn't psych myself into getting into acting. It happened very naturally. I discovered that side of me, and hopefully I would like to direct a film, but not right now. And I don't think I'm ready. What inputs did you get from your family? You come from a filmy background, so how did they help you with it? They just stood by me, and if I needed any help, I went and asked them and they told me. So they just stood by me like pillars and made me stronger and helped me and gave me the support. Thank you so much, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां शमिताभ की पूरी स्टार कास्ट के लिए। Thank you. बाल्की सर कुछ कहना चाहते हैं? Okay, guys, we'll just take a piddly break and just get back. Come. Okay, it's time for a piddly break, ladies and gentlemen.